Hello everyone. Welcome to Creativits. I Sumit Joshi welcome you all on the behalf of entire Creativits team. And today I am here to talk on what are the do's and don'ts that one must keep in mind for taking first attempt of NATA, right? So NATA अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपका टारगेट है NATA 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट. So let's get started and let's talk about it. So there are 7 different kinds of reasoning as suggested by the official notification of NATA 2023. तो हम एक एक करके हर एक रीजनिंग पर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए while preparing as well as while answering in the exam, right? And कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई एरर ऐसी कोई मिस्टेक कमिट नहीं करनी है while taking the exam, right? So let's start this session. The very first thing that I would like to bring to your notice is that I've kept it very simple. I've kept it in the form of table only. बहुत सारा कंटेंट ना रखते हुए बिल्कुल ऐसा कंटेंट रखा है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली रीडेबल हो and easily implementable, right? Because there are only 9 days left after this day, right? After this day, there are only 9 days left. And I know many of you are who are also targeting JEE attempt 2 will be busy with this paper tomorrow. So you can watch this video after taking the paper 2 attempt and then start planning for the first attempt of NATA. So let's talk about the types of reasoning and what are the things that we must keep in mind and what are the things that we should not be committing, what are the mistakes that we should not be committing. So let's talk about the very first diagrammatic reasoning. Very first diagrammatic reasoning, what are the do's here? Observe, interpret, and visualize. These are the terms, these are the words that I've chosen here. So, whenever you are solving any equation based on diagrammatic reasoning, जो भी एक visual image आपके सामने है, observe it very carefully, interpret what is given, how, what is the pattern, how is it unfolding or how is it folding, etc. Right? So if it is a paper folding unfolding question, so वहां मैंने ये एग्जांपल लिया कि पेपर फोल्ड किस तरह से हो रहा है, अनफोल्ड किस तरह से हो रहा है, उसको लेकर बात कर रहा है, राइट? हो सकता है कि यहाँ पर एक मिरर इमेज या वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो. सो मिरर इमेज के केस में किस तरह से सिचुएशन होगी, वाटर इमेज में किस तरह से होगी. सो इस तरह से ये पॉइंट सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्व करना कि being what is going to happen, what is given, किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. क्या हम उसे ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो ऑब्जर्व किया है उसको ठीक ठीक प्रोसेस कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है या यहाँ पर पेपर फोल्डिंग इस तरह से हो रहा है या ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये इसका कोड हो सकता है, राइट? सो ये वाले थॉट्स हमें बहुत क्लियर होने चाहिए. देन विजुअलाइज इट, कि उसके बाद जो आपसे एक्सपेक्टेड आंसर है उसके लिए आप विजुअलाइज कीजिए. what if the same pattern is followed, what will be the possible outcomes, and then select one of the most appropriate option as your answer. Fine. So what we should not commit, what are the don'ts in diagrammatic reasoning? Do not conclude quickly. Do not conclude quickly. बहुत जल्दी में बात ना करें आप, राइट? पैटर्न दिखाओ सर, मुझे तो लगा बस ऐसा ही होने वाला है, एंड आई मार्क द आंसर विद इन 15 सेकेंड्स और आई मार्क द आंसर विद इन 20 सेकेंड्स. बहुत इजी था मेरे लिए इसे जज कर पाना. हैव पेशेंस, अभी आपके पास इतना टाइम है. आप एग्जाम में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने से पहले अपनी प्रैक्टिस में, while you are solving the questions at your home, at your
कोचिंग, जहां पर भी आप अपना इस तरह का प्रिपरेशन क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट कर रहे हैं, वहां पर इस बात के लिए आप बहुत केयरफुल रहिए, बिकॉज जिस तरह से अभी अगले 8-10 दिन में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिस तरह से आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यू विल गोइंग टू रेप्लिकेट द सेम, यू विल बी गोइंग टू रेप्लिकेट द सेम on the exam day. So please ensure कि आप इस प्रोसेस को वैसे ही फॉलो करें जैसे आप एक एग्जाम डे पर एक स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करते टाइम करना चाहते, राइट? सो मेक श्योर आपका माइंडसेट वैसा हो, आप उसी टाइम प्रेशर को भी फील कर रहे हो। अगर ऐसा लगता है तो यू कैन यूज स्टॉप वॉच और टाइमर, that in half an hour I need to complete these many questions of this particular type or this particular section of reasoning, right? So that can be done. So let's move to the second important thing, that is numerical reasoning. Read the question very carefully, read, understand and form equations. So when I talk about numerical reasoning, यहाँ पर जो questions होते हैं वो quantitative aptitude based होते हैं। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है। इफ यू आर एबल टू रीड इट, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड, ये थॉट अगर आपका क्लियर है तो 70% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। रेस्ट कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए एंड यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई दोज फॉर्मूले, राइट? सो these are the 3 steps: read, understand and form equations. So जो given data है उससे आपको equation form करनी है। After that सिर्फ formula का application is required. If you know the formula, you will definitely get the answer. In majority of the cases आपको बहुत सारे formula learn भी नहीं करने, conceptual clarity अगर होगी तो you'll be reaching to the answer. Fine. You can take screenshot. I'll be outside the frame after a certain time. So first 3 का जब हम बात कर लेंगे तो I'll be giving you time where you can take the screenshot. Fine. What we do not need to do is calculation error. You cannot miscalculate anything. Please be very careful about it. Numerical reasoning में I have heard this from many students, sir, हमने कॉन्सेप्ट सही समझा, फॉर्मूला सही याद था, इक्वेशन सही फॉर्म किया, कैलकुलेशन एरर हो गया सर। सो प्लीज एंश्योर दैट डज नॉट हैपन even in practice, even in practice. Fine. Let's talk about the third section, verbal reasoning. Verbal reasoning की अगर हम बात करें तो verbal reasoning में the points that are important is read, comprehend and form structure. देखिए verbal reasoning की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 फॉर्म में इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। पहला हो रहा होगा एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेट करता सा पार्ट, दूसरा फॉर्म आ रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज वाला रीजनिंग वाला पार्ट, राइट? सो यहां दोनों चीजों को अगर हम रिलेट करके देखें तो मैं पहले बात करूंगा एनालिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट को लेकर। सो द वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड हियर इज रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म अ स्ट्रक्चर। सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट क्लियरली, कॉम्प्रिहेंशन सही होना चाहिए, क्वेश्चन में जो इनपुट्स है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड देन फॉर्म स्ट्रक्चर। उसके बाद आप एनालिटिकल रीजनिंग में जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, वेदर इट इज फॉर सेटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशंस और डिस्टेंस डायरेक्शन, व्हाटएवर इट इज, मैंने पहले ही कहा था मैं बात कर रहा हूँ एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट पर पहले। फाइन। सो पहले एनालिटिकल रीजनिंग पर ही बात करते हैं। सो एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह से आप काम कर रहे होंगे। व्हाट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज? सो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यू हैव टू रीड, कॉम्प्रिहेंड and identify the structure or relate it with the knowledge that you have, right? So this is how. क्या हम नहीं करना चाहते? What is the one thing that you should not be doing is speculation. Randomly guess करना, अच्छा ऐसा है तो ऐसा ही आंसर होगा, इस तरह के prediction, please avoid that. Please do avoid that.
क्वेश्चन रीड कीजिए, समझिए, यू विल बी रीचिंग टू द आंसर। आप अपनी प्रैक्टिस में ये हैबिट डेवलप कर ले, so you will not be repeating the error or you will not be committing the error that I have mentioned here in your exam. Fine. So those who want to take screenshot can take the screenshot. I think it is quite visible and you can take the screenshot. Yes, Karthik, all the very best for JEE tomorrow. So I think you have taken the screenshot. Continue. Let's continue to next part. So if you are new to our channel, subscribe our channel, follow us on Telegram and Instagram as well. You can get the link of the both social media handles on the channel. आप चैनल के राइट टॉप कॉर्नर पर देखेंगे, यू विल बी फाइंडिंग द लिंक टू टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। इनफैक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके यू कैन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल फॉर फ्री। फाइन। एंड if you are still not following us on Telegram and Instagram, you are missing something that you must be aware of. Regularly कुछ polls हो रहे होंगे, regularly updates आते हैं, GK and English based quizzes होते हैं, questions available होते हैं on both the handles, Telegram as well as Instagram. So दोनों ही places पर अगर आप हमें follow करें, you'll be updated with what is going to happen in the upcoming exams, right? Also follow us on, also subscribe our channel on YouTube. अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, you may miss out something that is important for your exam. So let's continue and talk about the remaining four. So I'll be talking about inductive reasoning. So inductive reasoning, sir, इंडक्टिव रीजनिंग में पूछा क्या जाता है? सो नाटा ब्रोशर का एनालिसिस एक वीडियो पास्ट में आई हैव टेकन, आप उस वीडियो को भी हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं एंड यू विल गेट द आइडिया कि यहां इस तरह की रीजनिंग में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू। इंडक्टिव रीजनिंग, you must observe, analyze and then conclude. इंडक्टिव रीजनिंग पॉसिबल आउटकम्स पर बात कर रहा होगा, पैटर्न्स की बात बहुत ज्यादा हो रही होगी, राइट? कि से सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, विजुअल सीरीज है, एक पैटर्न बन रहा है, अब आप बताइए कि नेक्स्ट इमेज कौन सा आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो इंडक्टिव रीजनिंग में आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो यू मस्ट ऑब्जर्व, यू मस्ट एनालाइज एंड देन यू शुड कंक्लूड। डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन हरी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने मेरी प्रैक्टिस में किया है तो इसका आंसर अगर ऐसा था तो ऐसा ही कुछ होगा। प्लीज, हो सकता है जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल 99% वैसा हो सकता है, बट चेक इट वंस, चेक इट वंस। बिकॉज क्वेश्चन फ्रेम करने वाले का मेंटालिटी ये है कि उसको भी पता है कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर वेरी कॉमन। वो उन क्वेश्चंस में छोटा सा एक ट्विस्ट लाते हैं और आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। फाइन। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली और उसके बाद इन स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे होंगे एंड द स्टेप्स आर ऑब्जर्व, एनालाइज एंड देन कंक्लूड। फाइन। लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशनल जजमेंट। सिचुएशनल जजमेंट, कोई एक सिचुएशन आपको गिवन है और उस सिचुएशन के बेसिस पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, इसका पॉसिबल अजम्पशन क्या हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर going to be there in this situational judgment. In fact, design aptitude based questions भी इस कैटेगरी में पुट अप किए जा सकते हैं बिकॉज बहुत क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है नाटा 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो हम ये सारी बातें पॉसिबल इन्फरेंसेस ही ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट
the points that you need to understand, identify the problem, think possible solution. These are the two steps for any situational judgment. And what is a big no? What is a don't? So don't be opinionated. आपका अपना ओपिनियन वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. कोई एक अजम्पशन कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जहां पर आपका ओपिनियन और जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आपका ओपिनियन मैच नहीं करता है, तो आप अपना कंक्लूजन मार्क ना करें. Please be careful about it, right? So don't be opinionated. Don't be opinionated in situational judgment reasoning type questions, right? So situational judgment क्या होता है? I have explained here. Still, if you are confused, you can go and watch that video जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बताया था कि नाटा एप्टीट्यूड ब्रोशर डिकोडेड, नाटा एप्टीट्यूड ब्रोशर को का एनालिसिस इस तरह से एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं एंड देन यू कैन आंसर इट और यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइन. Let's talk about logical reasoning. So logical reasoning, you need to recognize things. किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, रिलेट थिंग्स, आपने अपनी प्रैक्टिस में इस तरह से कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन रिक्रिएट और फॉर्मुलेट द स्ट्रक्चर और द पैटर्न, राइट? सो रिकॉग्नाइज, रिलेट एंड रिक्रिएट. डोंट बी लेजी इन क्रिएटिंग. डोंट बी लेजी के सर कौन इतने कॉलम्स ड्रॉ करेगा, कौन ये पैटर्न रफ शीट पर ड्रॉ करेगा, आई एम इन रश, मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज डोंट डू दैट. देखिए, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा टाइम डिमांड करता है. इनफैक्ट इसमें भी कुछ ही क्वेश्चंस है जो आपसे ये डिमांड कर रहे होंगे कि गिव मी सम टाइम, राइट? And if you are not giving that required time, you may end up marking the wrong answer. Fine. And the last one is abstract reasoning. So abstract reasoning में बहुत ज्यादा रिकॉल करना होगा आपको चीजों को कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है क्या, या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा विड्थ बहुत ज्यादा है. जीके भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट? और जीके का एप्लीकेशन टू योर लाइफ, वो सारी बातें आ रही होगी. फाइन. सो प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स, रिकॉल करेंगे, कैटेगराइज करेंगे एंड देन प्रायर नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे. रिकॉल कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन से कैटेगरी का था, क्विकली आइडिया मिल जाता है, नोट इट डाउन, और फिर इसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, हाउ विल आई अप्लाई टू गेट द आंसर. क्या नहीं करना है, सो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि यहां पर तो ऐसे ही काम होगा, ये सिचुएशन है तो ऐसा ही आंसर होगा, ये क्वेश्चन है जीके पर बेस्ड है, ये इंसिडेंट्स मुझे याद है, आई नो दिस इंसिडेंट्स एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई दिस शुड बी द आंसर. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट दैट. प्लीज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, you can take the screenshot of the same, and then we'll be winding up this session quickly. So please take the screenshot. If you are taking the screenshot, you can take the screenshot. Pause this video, take the screenshot, and let's end this video, guys. So thank you so much, guys. Thank you for being there. And I wish you all the best to all of you for your JEE paper 2 attempt. That is, आप BARC का जो पेपर है वो अगर लिख रहे हैं next day, so all the best. And I also wish you all the best for the very first attempt of NATA that you are going to appear on 21st of April 2023. So thank you so much, guys, and I'll see you in our next video.